Very good morning everyone. Today we will discuss about the triangle law of vectors addition. Clear? इससे पहले हमने स्टडी किया था about the addition of the vectors when they are parallel to each other. Then addition of vectors when they are anti-parallel to each other. तो दोनों ही सिचुएशंस में हमने एक चीज डिस्कस की थी. हमने एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो किया था, हेड टेल कॉम्बिनेशन, जिसको कि रेगुलर ऑर्डर भी बोला जाता है. तो जब वेक्टर्स पैरेलल थे या एंटी पैरेलल थे तो उनको ऐड करने के लिए हमने रेगुलर ऑर्डर या हेड टेल कॉम्बिनेशन फॉलो किया था. अब हमारे पास कुछ एक ऐसे वेक्टर्स हैं which are acting at certain angle with each other like this. This is vector A here, and let us consider here it is vector B. So both the vectors we have to add, and they are acting at some directions with each other. दोनों अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन. ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की स्टेटमेंट क्या है. ये बोल रहा है जिन वेक्टर्स को ऐड करना है, हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करना है, देन दिस बोथ द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. तो जैसे साइड ऑफ ट्राइंगल है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, हम इन दोनों वेक्टर्स को ट्राइंगल की साइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और वो भी हेड टेल कॉम्बिनेशन यानी कि रेगुलर ऑर्डर में. जैसे फॉर एग्जांपल हियर इट इज वेक्टर ए. तो जिस तरह से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वही सेम हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज द वेक्टर बी, एंड हियर वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस वेक्टर बी इन मैग्नीट्यूड as well as in direction, and this is head tail combination which is also called as regular order. Then the third side of the triangle means closing side of the triangle that represents the resultant vector. तो इसलिए ये जो ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड है, ये क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट करती है रिजल्टेंट वेक्टर को. मींस वेक्टर r is equal to vector a plus vector b, and this is the arrowhead. Means the vectors a vector and b vector to be added are represented as the sides of the triangle both in magnitude and direction. In head tail combination means regular order. Then the third side or closing side of the triangle, but in opposite order. Opposite order means head and tail combination. This is called as opposite order. Then this third closing side in opposite order gives the resultant of these two vectors. So we can say it states that the vectors to be added are represented as the sides of triangle. ठीक है, in regular order, both in magnitude and direction. तो जिन वेक्टर्स को हमने ऐड करना है उन दोनों को रेगुलर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ. देन द थर्ड साइड that is the closing side of the triangle, ठीक है, represents, and the third side represents the resultant vector. तो थर्ड साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट वेक्टर. वो भी कैसे? बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. रिजल्टेंट वेक्टर बोथ इन मैग्नीट्यूड and direction. So this is the statement of the
ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जिन वेक्टर्स को ऐड करना है उनको हम ट्राइंगल की साइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी रेगुलर ऑर्डर में। Then the third side of the triangle means closing side of the triangle in opposite order represents the resultant vector, that is vector R is equals to vector A plus vector B. So this is the resultant vector. This resultant vector produces the same effect as are produced by individual vectors A and B vector। ठीक है, तो जब टू वेक्टर्स जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर उनकी तरह ही अकेले में ही क्या करेगा, इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर एज वेल एज इट्स डायरेक्शन, क्योंकि कोई भी वेक्टर है इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो दैट इज कॉल्ड एज analytical treatment to find the magnitude and direction of resultant vector तो हमने एनालिटिकली फाइंड आउट करके देखना है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन कितनी है। सो फॉर दैट पर्पस लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग दिस ट्रायंगल कैन बी नेम्ड एज, इस ट्रायंगल को हम नेम रख सकते हैं, लेट इट्स O, इट इज P, हियर इट इज Q। ठीक है, सो वी आर हैविंग दिस ट्रायंगल OPQ। अब इस ट्रायंगल OPQ का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कि जो वेक्टर R है उसका मैग्नीट्यूड कितना है और वेक्टर R का जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो कितनी है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, मींस मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का मतलब है हमें OQ साइड कितनी है, इसका साइज कितना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए हम ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। फॉर दैट वी नीड ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो फॉर दैट पर्पस वी विल ड्रॉ ए नॉर्मल, दैट इज this QM is a normal drawn on this OM. So first of all what we will do, we will draw a normal का नेम है QM on O, किसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, QM हम किसके ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, OM लाइन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। Then by using the Pythagoras theorem, then from राइट एंगल्ड ट्रायंगल, हमारे पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल आ रही है। देखिए कौन सी है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, हियर दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, मींस इट इज QOM। तो QOM में से हमने फाइंड आउट करना है पाइथागोरस थ्योरम का लगा के, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So we can say this OQ square is equals to OM square plus QM square. This is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, or we can say this OQ is equals to what? OQ कितना है? OQ is equals to the magnitude of this resultant vector, means it is equals to capital R. Here it is square, so we can write it as R square. तो it means OQ की वैल्यू हमने कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर दी, it is equals to, now here it is OM and this OM is equals to this OP plus PM. So we can say it is OP plus PM whole square plus QM whole square. Clear? अब देख लीजिए यहाँ पर we can say it is R square equals to, now here OP is equal to magnitude of vector A. So here it is A plus PM we don't know, QM we don't know. Clear? It means this is
equation number 1. Now we have to find out the value of this Pm and this Qm. हमें Pm और Qm की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें ये Pm की वैल्यू पता नहीं है, साथ में Qm की वैल्यू भी अननोन है. सो वी हैव टू फाइंड आउट दीज टू वैल्यूज. ठीक है, देखिए अब इन टू वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग दिस एंगल थीटा. This is the angle between vector A and vector B. ठीक है, so if theta is the angle between vector A and vector B, then तब देखिए हमारे पास ये स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, दिस राइट एंगल ट्राइंगल. फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Pm and value of Qm. Here this PQ is equals to magnitude of vector B. It means this is known to us. Pm is unknown to us, Qm is unknown to us. It means we will make use of the concept that is unknown divided by known. So unknown divided by known का concept use करके we will find out the value of this Pm and Qm. तो firstly we will find the value of this Pm. तो Pm की value find out कर लेते हैं. Means Pm is unknown to us. So unknown divided by known, that is PQ. So Pm divided by PQ is equals to, इस ट्राइंगल में देखिए Pm क्या है, यहां पर Pm is equal to base and PQ is equals to hypotenuse. Then base upon hypotenuse is the trigonometrical ratio cos theta, or we can say this Pm is equals to PQ cos of theta. Now this PQ is the magnitude of this vector B, so we can substitute here. So this is Pm is equals to B cos of theta. It means we have calculated the value of this Pm. This value we have to substitute here. Here we have to substitute this value. That's why we are calculating this. Secondly, now we want to find out the value of this Qm. Qm हमने find out करना है. So here it is Qm. Again we will make use of this little bit smaller triangle. So again unknown divided by known means this Qm is divided by PQ. So we can say also this Qm divided by PQ is equals to, अभी देखिए इस ट्राइंगल के अंदर Qm क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड QP और PQ इज द हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, here क्या आ गया हमारे पास बेटा, here it is Qm upon PQ. So perpendicular upon hypotenuse means it is a sine of theta. So from here we can say this Qm is equals to PQ sine theta, and you know very well PQ is equals to, it is the magnitude of vector B. So we can write it as B sine of theta. It means we have found out the value of Qm. Say it is equation number 3. Now we have calculated both the values. Here it is Pm and here it is Qm. Now we can substitute these values in equation number 1. So put this value from equation 2 and 3 in equation 1. ठीक है, 2 और 3 को equation 1 में हमने substitute कर लेना, and finally we will get the magnitude of the resultant vector. So put equation 2 and 3 in equation 1. So therefore this equation 1 implies this r square is equals to, it is a plus, now Pm we have find out, here it is B cos of theta. So it is B cos of theta whole square plus Qm whole square. We have find out the value of Qm, that is B sine of theta. So it is B sine of theta whole square. Now we can solve it. After solving, we will get r square is equal to a plus b cos theta whole square. So we will apply the formula. So here it is a square plus b square cos square theta plus 2ab cos of theta.
So this we have solved here, we have written this value here. Now here it is plus b sin theta whole square. It means it is b square sin square theta. अब देखिए आपके पास क्या है, here you have this value. This is the b cos square theta. Here it is b square sin square theta. So we can take it as common. We can write it as, it implies r square is equal to a square plus b square into cos square theta plus sin square theta. So we have plus 2ab cos of theta. Now here this cos square theta plus sin square theta is equals to 1. ठीक है? So we can write it as r square equals to a square plus b square into 1 plus 2ab cos of theta. Or we can say r square equals to a square plus b square plus 2ab cos of theta. Or simply from here we can say that magnitude of vector r, that is only r is equals to under root of this a square plus b square plus 2ab cos of theta. So this is the formula for magnitude of a resultant vector. So we can say which is the magnitude of resultant vector. So this is the magnitude of a resultant vector. Now next we have to find out the direction of this resultant vector. इस resultant vector की direction कितनी है, that we have to find out. ठीक है, डायरेक्शन जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, we find out the value of some tangent. So let us consider this is angle alpha, means vector r is making some angle alpha with vector r, vector a. ठीक है, vector r is making angle alpha with vector a. So that's why from here this bigger triangle we can find out the value of tangent alpha. ठीक है, now from this triangle, this one, from here we can find out the value of this tangent of alpha. So we can say if alpha is the angle made by vector r with vector a, then the direction of vector r is tangent of alpha is equal to tangent of alpha. We have to find out. ठीक है, again we have to make use of the trigonometrical ratio tangent alpha here. So tangent alpha is equal to perpendicular upon base. So here it is perpendicular, here it is QM and its value we have calculated already. तो ये QM कितना आया था हमारे पास? This was equal to B sin of theta. Clear? So it is QM divided by, this is the perpendicular and divided by base means OM. So OM is the base here, or we can write this QM divided by OM. देखिए यहाँ पर इसके इक्वल है, it is equals to this OP plus PM, so plus PM. Or we can say this tangent of alpha is equals to, now we can substitute the value of QM. QM is equals to B cos of, B sin of theta. So QM is B sin of theta divided by OP. OP is divided by OP is the magnitude of this vector A. This is OP. ठीक है? So we can write it as A plus PM. PM we have find out and it comes out to be B cos of theta. So we can say it is B cos of theta. So tangent alpha is equals to B sin of theta divided by A plus B cos theta. And this equation represents the direction of resultant vector. So which represents the direction
of resultant vector. So this is about the triangle law of vector addition. So in case of triangle law of vector addition, vectors to be added are represented as the sides of the triangle in a regular order. Then the third side of the triangle in opposite order gives the resultant. Clear? तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है. उसको हम बोलते हैं बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड और बाय यूजिंग एनालिटिकल ट्रीटमेंट. तो एनालिटिकल मेथड और एनालिटिकल ट्रीटमेंट में हमने यूज किया पाइथागोरस थ्योरम. अकॉर्डिंग टू दैट हमें क्या करना पड़ा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ा. ठीक है, नॉर्मल जैसे ही ड्रॉ किया तो राइट एंगल ट्राइंगल में से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर वी हैव कैलकुलेटेड एंड इट कम्स आउट टू बी r is equals to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. Similarly from here we find out the direction and direction is calculated from tangent of alpha. ट्राइंगल वही है, उसमें टेंजेंट अल्फा फाइंड आउट किया, जहां पर अल्फा क्या था, एंगल बिटवीन वेक्टर r and वेक्टर a. ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा इज देयर. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड as well as direction of the resultant vector. ठीक है, by tomorrow we will study about the parallelogram law of vector addition. Clear? Till that, bye.